it's like a double-edged sword. So you meet this and then that happens. Otherwise, there's nothing. कल जो आपने सीन किया और वो अब आज देखते हैं तो यू थिंक कि अरे यार काश मैंने वो चीज इसमें कर दी होती. Human life kind of just goes on. We accept things and then we just go on. So वही हो रहा है. I'm doing it. तो कब आना है ऑडिशन? लाइक ये बस मैं लिख रही हूँ फिर. मैं बोला हाँ बिल्कुल. Alia is not out of someone's rule book that you're going to do it like this, you're going to do like that. Look for an equation जहाँ पे आप किसी के साथ काम करते हैं तो वो बॉन्ड बहुत जरूरी होता है because it helps me as an actor. और सोनी टीवी वापस लौट रहा है एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ, एक बहुत ही अलग अनोखे शो के साथ. हम बात कर रहे हैं स्टोरी 9 महीने की और आज इस फन चैट सेशन में मेरे यानी कि विशाखा के साथ जुड़ने वाले हैं इस सीरियल के लीड कलाकार. हम बात कर रहे हैं सुकृति खानपान और आशीष शर्मा की. तो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे करते हैं स्वागत इन दोनों कलाकारों का और जानते हैं इस स्टोरी के पीछे की खास कहानियां, कैरेक्टर के पीछे का ब्रीफ एंड अ लॉट मोर फन एंड मस्ती सिर्फ इनकी जुबानी, इनके सेट से. तो गाइस पहले तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में. पहले तो ये बता दीजिए कि ये न्यू नॉर्मल कैसा फील हो रहा है दोनों को. बहुत अच्छा. आप देखिए चेहरे को कितना हंसी है हमारे चेहरे पे, कितने खुश हैं हम हमारा शो आ देख रहे हैं हमें. We are happy, yeah. The new normal is something that I think हम सबको accept करना होगा. So of course I accepted it long back and we just have to maneuver ourselves around it. Or human life kind of just goes on. We accept things and then we just go on. So वही हो रहा है and I'm happy that even during this time we are able to present इतनी अच्छी story, इतनी अलग story हमें इस time. So I'm just feeling overall good and being cautious at the same time. फर्स्ट टाइम आप दोनों को ये स्क्रिप्ट जब ब्रीफ की गई, अपने किरदार बताए गए, पहला रिएक्शन क्या था? Anjum called, who's a producer and a sweetheart writer. She called me and she narrated me the whole story and about my character. I was like, yes, I am on it. I am doing it. तो कब आना है ऑडिशन? Like ये बस मैं लिख रही हूँ फिर. मैं बोला हाँ बिल्कुल. So let me tell you this कि I was the first one who was casted in this show. So my association with production, with Anjum and with this production house as a whole, with story 9 months की, it's very long back. Like जब से this show was incepted, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ. So when I'd gone to her, I think the first time I tested and the next time I think I was just doing a mock test with Ashay. So post that I met Anjum and they told me about the story and everything. I think why I really believed in the story is that whenever Anjum used to tell me or the entire team used to sit together and discuss, I always used to feel that they are extremely passionate about what they are doing. Like I just felt that they are really going to make something good. Because they had like a pilot which was just a voice pilot which was so great. Yeah. And she made me hear the entire thing. और फिर जिस तरीके से they used to tell me that she has to be like this and she has to be like that, and we had numerous discussions about it. So I just felt that they were very passionate. That was my entire idea. At that point in time I was being offered a lot of other shows also and I did say no to them because I was like, no, I think I probably should do this. कोई भी किरदार आपको ऑफर होता है तो वो ऑफर हो जाने के बाद स्क्रीन पे आने तक व्हाट इज द ट्रांजिशन दैट यू गाइस, और मे बी व्हाट इज द R&D दैट यू गाइस डू फॉर दैट कैरेक्टर? I don't think I did any sort of a research or anything for it because I think Alia had too many layers. There's a very tough layer of Alia, then you understand why it's there and then it's more. So I think Alia is not out of someone's rule book that you're going to do it like this, you're going to do like that. I think in any case जब भी मैं कोई role करती हूँ, I always believe that the role is in the lines, it's in the script. So I don't need to go out looking somewhere for it. I need to probably just be there and look at it and that's when it happens. So I think वो मेरा process था कि जब सारे episodes आने लगे और हमें वो लोग देने लगे. So I started paying attention on what was happening and what was, the in-between lines I started reading. So for me, it was more trying to read and understand where this girl would be coming from rather than doing any sort of research and stuff. Also because this is probably being done for the first time on TV, I did not have too much to relate to and I did not want to. I think that's always been my thing. So it's like, you can make biryani and I can make biryani, but I'll probably make my style of biryani. So I think that's what I wanted to do. And of course, keeping the nuances of the character in place. He's an aspiring writer. ठीक है, वो बहुत ambitious
के इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंट्रापर्सनल रिलेशंस बहुत अलग है, वो डायनेमिक्स ही बहुत ही अलग है। क्योंकि अगर आप अपनी माँ के करीब हैं और आप पापा के करीब नहीं है तो चलता है, पर आप माँ के करीब हैं और पापा को आप हेट करते हैं तो फिर वो इक्वेशन अलग हो जाता है। और फिर बहुत अपबीट है, बहुत वॉइसिंग है, और ऐसा एक है इंसान जो अपनी चीजें बोलता है, जो गलत है उसको बेधड़क बेझिझक पॉइंट आउट करके उस पर स्टैंड लेता है। सोसाइटल पेट्रियार्की पे उसके अलग अपने थॉट्स हैं, तो उसके लिए आपको पोएम, पोएट्री रेसिटेशन, क्या पोएम आप समझते हैं। सो आई हैव हैड मास्टर क्लासेस, मेरे वन ऑन वन इंटरेक्शन हुए बहुत लोगों के साथ। और क्या होता है ना, जब आप यूपी तरफ जाते हैं तो इट्स अ बेल्ट, वो बुंदेलखंडी बघेलखंडी एक बेल्ट होता है जहाँ पे कुछ किलोमीटर्स में वो फ्लेवर चेंज होता जाता है ना। तो पहले आप हमारी, तो हमारी का हमाई हो जाता है, काहे, क्यों, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एकदम देसी, एकदम ठेठ भी नहीं बोलते हैं, बट जस्ट दैट टिंच ऑफ फ्लेवर यू नीड टू बिल्ड दैट कैरेक्टर। तो उसके लिए भी हमारे बहुत सारे वन ऑन वन इंटरेक्शंस हुए, बहुत सारे लोगों से मैं वहाँ पे जो हैं लोकलाइट्स हैं उनसे बातें हुई हमारी। तो हाँ, एक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम वेंट जिसमें हमने अच्छे से प्रिपेयर किया इस कैरेक्टर के लिए। तो पहला इंप्रेशन एक दूसरे का आप लोगों पे क्या था? When you met each other, when you were briefed, कैसा इंप्रेशन आया एक दूसरे का? I think I was thinking about so many other things because, you know, like he's saying, I wasn't told, I didn't have a reference point कि मुझे क्या करना है. I was more like कि मुझे बहुत अच्छा करना है, and no one knew कि वो बहुत अच्छा क्या है. So I think I was more pressurized into doing, I mean, I think mentally I was in that thing कि I have to do very well just to think about him. I knew that, you know, he's Ashay, and I really did not go into that overthought ki, oh, what is he? Or I think I was just so busy in the first, especially the first 5 episodes, because there was so much for me to do. I think I was really busy. I'm sorry, Ashay, but I didn't like form an impression in my head. Look for an equation जहाँ पे आप किसी के साथ काम करते हैं तो वो बॉन्ड बहुत जरूरी होता है, because it helps me as an actor. तो हाँ, डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा वो अपनी दुनिया में व्यस्त थी, बिजी थी. So हाँ, मैं गया, हमने बातें की. सुकीर्ति जब भी आती तो मैं ही, I used to take the initiative and I used to be like, क्या हाल है सुकीर्ति, कैसी हैं आप, क्या बात है यार. तो हाँ, वही बातें होती थी, बट बहुत सारा काम की हुई है, बहुत सारे हिट शोज दिए हुए हैं उन्होंने. तो एक वो होता है ना, एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी यू टॉक टू देम एंड ट्राई टू नो कि भाई बताओ, शेयर करो कि आप हम ही कुछ सीखें, और बहुत सारी चीजें सीखने की है आपसे. तो यार वो चीज मेरे अंदर हमेशा से थी. तो आज भी जब भी हमारी बातें होती हैं तो मैं ही जाके सुकीर्ति को ऐसे छेड़ता हूँ, हाय सुकीर्ति. Do you think कि कहीं ना कहीं आपके shoulders पे वो pressure था कि that you know now that I'm making a comeback, this comeback needs to be bang on, this comeback needs to be very impressive because fans काफी expectations लेके बैठे हैं आप. No, I don't take that kind of pressure कि I have to impress someone or I'm doing it for someone. I think whenever I've done anything, it is literally for me, and I think Asha will second me on that. I'm not someone who's literally bothered कि अरे क्या होने वाला है. मुझे ऐसा लगता है कि if my name is there and if I'm doing it, it has to be really good. I do not know, and I'm not an astrologer, nobody is. I do not know what this show will do or what will it not do. I think my basic concentration always is that I should, that entire frame, if I'm saying something, if I'm emoting something, if I'm wearing something, that should be perfect. So it's not for anyone else, and obviously it is, the show is for everybody, but what I do is really for my own personal satisfaction. I think the entire world can tell me, oh, this is very nice, and if I don't like it, I'm not going to like it, and I know that because a lot of times I'm like, no, I don't think I like that. So I think it's more a pressure of honestly pleasing my own self before anyone else, and then if I feel that okay, this is up to my mark, then maybe everyone will like it. But then nice. Is it correct to say that you guys are a big critic of your work? ये कहना गलत होगा कि सही होगा? यार वो होगा ना, हर एक्टर होता है, किसे अपना काम पसंद आता है. लाइक मुझे तो पसंद नहीं आता.
मुझे तो अपनी फोटोज भी पसंद नहीं आती है. Means मतलब sometimes if I really say that, wow, I think I'm looking nice, means you have no idea what kind of an effort I would have done to look nice in the scene, emote it and do it. Because I think as an actor, after a point of time, everything else stops mattering to you. Your job matters to you. You know, the satisfaction that you really did it up to the mark. I think that's mattering more than anything else. And if you don't do it, I don't think anyone's going to appreciate your work, and you're not going to have any fans, and there's going to be no one waiting for you to come back. कल जो आपने सीन किया और वो अब आज देखते हैं तो यू थिंक कि अरे यार काश मैंने वो चीज इसमें कर दी होती. अपने किरदारों के बारे में आप सुकृति बताइए कि आपके को स्टार का जो एक्चुअल रियल किरदार है उसके बारे में आपको क्या पसंद है. एंड आशय, आप मुझे बताइए कि सुकृति का जो रियल किरदार है उसके बारे में आपको एक चीज या एक क्वालिटी क्या है जो पसंद है. So I think in his real kirdar, I really like the poetry that Saranga does. It's very nice and it's very soulful. So I like the poetry that Saranga as a character does. She knows how to tackle life, and whatever comes on her way, she knows how to beat it and go ahead. So yeah, that's a very big as a person and as a character too. What are you up to in the last? Tell the fans जो आपका शो देखने वाले हैं, and I hope वो आपका ये फन सेगमेंट, ये यादें जो आपने थोड़ी ताज़ा की है उनके साथ, वो पसंद करें. What do you have to tell them? अरे ऐसी कहानी यहाँ पे आपको देसी तड़का मिलेगा और फिर आलिया श्रॉफ जैसे अपबीट कैरेक्टर्स बहुत प्यार से बहुत अच्छे लोगों ने बनाया है. बहुत अच्छा शो है, बहुत फ्रेश है. आइए देखिए और प्यार दीजिए. Yes, I just want to tell the fans and everybody who's wanting to watch this show that बहुत well written है, बहुत अच्छे से execute किया है. हमने बहुत time लगा है इसको बनाने में. I think we were shooting since August, so we have really paid attention on the quality और storyline बहुत अच्छी है. So please watch it, and I hope कि जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं transpires on screen and it comes up to become a beautiful show, and we would love for you to be a part of this journey. Well, thank you so much, guys. It was a pleasure having the two of you. I wish you all the luck, and I hope कि हम next बात जब करें वो तब हो जब आप लोग अपनी TRP की success हमारे साथ discuss कर रहे हो. Yay! Good luck. Thank you so much. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Well, thank you so much, guys, for watching this fun chat session with me, Vishakha Pandit, and that was Sukriti Khandpal and Ashish Sharma for you guys. आप लोग इनका नया सीरियल स्टोरी 9 महीने की देखना ना भूलिएगा, only on Sony TV. And also नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आप कितना एक्साइटेड हैं या फिर आप कितना हैप्पी हैं सुकृति को कम बैक करते हुए देखने के लिए, and also आशय के इस न्यू जोड़ी के साथ पेयर अप होते हुए देखने के लिए. Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.